Follow me on Instagram account and subscribe to my channel for awesome great content. So let's start to this video. So नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रॉबिन। सो कैसे हो मोटो लवर्स? आई होप सब लोग बढ़िया है। कावासाकी इंडिया ने देश में अपने सबसे अधिक बिकने वाले मोटरसाइकिल का BS6 मॉडल हाल ही में लॉन्च किया है, दैट इज द निंजा 300। During the BS6 upgrade, the Ninja 300 has received a few cosmetic upgrades too, and here we list the top 5 changes of the motorcycle. So stay tuned and keep watching this video till the end. फर्स्ट ऑफ ऑल द डिजाइन। BS6 कंप्लाइंट निंजा 300 ने BS4 मॉडल से डिजाइन को बरकरार रखा है। हालांकि कावासाकी ने नए वेरिएंट में कलर पैलेट और ग्राफिक्स को अपडेट किया है। मोटरसाइकिल में ट्विन पॉट हेडलाइट, फ्लोटिंग स्टाइल विंडस्क्रीन और फेयरिंग इंटीग्रेटेड फ्रंट ब्लिंकर्स, मस्कुलर फ्यूल टैंक, स्प्लिट सीट और एग्जॉस्ट पर क्रोम हीट शील्ड का इस्तेमाल जारी है। फेयरिंग में बड़े वेंटिलेशन होल निंजा ZX 14R से प्रेरित है। सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एनालॉग टैकोमीटर की सुविधा है, जबकि बाकी जानकारी LCD स्क्रीन पर उपलब्ध है। Then talk about the colors. Ninja 300 में 3 कलर ऑप्शन है KRT ग्राफिक्स के साथ लाइम ग्रीन, कैंडी लाइम ग्रीन और इबॉनी। कैंडी लाइम ग्रीन और इबॉनी पेंट ऑप्शन में फेयरिंग पर हनीकॉम ग्राफिक्स के साथ आते हैं। दूसरी ओर लाइम ग्रीन ऑप्शन में कावासाकी रेसिंग टीम ग्राफिक्स की सुविधा है। सो कौन सा कलर पसंद है तीनों बाइक में? लेट अस नो द कमेंट सेक्शन बिलो। Then talk about the engine. The Ninja 300 BS6 continues to use a 296cc parallel twin-cylinder liquid-cooled motor despite complying with the newest emission norm. The power output has not dropped. Thus, the new model continues to draw 38.8 bhp of power at the 11,000 rpm and 26.1 Nm of peak torque at the 10,000 rpm. The engine is linked to a 6-speed transmission that is benefit from a slipper and assist clutch. Then talk about the hardware. The hardware on the BS6 model remains identical to its predecessor. इस प्रकार Ninja 300 BS6 में डायमंड फ्रेम को बरकरार रखता है। सस्पेंशन सेटअप में फ्रंट में 37mm टेलीस्कोप फोक्स और पीछे की तरफ प्रीलोड एडजस्टेबल मोनशॉक दिया गया है। एंकरिंग ड्यूटीज को फ्रंट में 290mm डिस्क और पीछे की ओर 220mm सिंगल रोटर द्वारा किया जाता है, जबकि सुरक्षा के लिए डुअल चैनल ABS शामिल। And talking about the price, the BS6 model has received a price increase of 20,000 over the old version. Thus, the Kawasaki Ninja 300 BS6 is now available at 3,18,000 rupees. That is, you can expect as the on-road price around 3,60,000 to 3,70,000. And all the prices are Ex-Showroom Kolkata, but showroom to showroom price vary करेंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या ये बाइक रिकमेंड करेंगे? वेल, अगर आप हार्डकोर निंजा फैन हो विद फर्स्ट टाइम बाइंग एंट्री लेवल कावासाकी बाइक, जो आप सर्विस कॉस्ट, माइलेज और पार्ट्स को मैटर नहीं करते, दैट इज द परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक विद द पावरफुल न्यू BS6 इंजन, लोड्स ऑफ फीचर्स एंड ग्रेट हैंडलिंग एंड पोस्चर। सो निंजा 300 इज द बेस्ट ऑप्शन एंड आई होप कावासाकी लवर्स आग बंद करके ही रिकमेंड करेंगे, बिकॉज इट्स अ ह्यूज डिमांड ऑफ द निंजा फैंस, स्पेशली 300cc से। So do you agree with my opinion? Let us know in the comment section below. ये बाइक compete करेगी Apache RR310 and KTM RC390. And that's it. So कैसी लगी वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक कीजिए। सो डू लाइक, एंड अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किए सो डोंट वेस्ट द टाइम, जल्दी से सब्सक्राइब करो एंड डोंट फॉरगेट टू बेल आइकन आल्सो। एंड ये वीडियो फैमिली फ्रेंड्स को ढेर सारा शेयर कीजिए। अगर डाउट हो इसी वीडियो में तो कमेंट में बताना जरूर, एंड फॉलो माय इंस्टाग्राम अकाउंट राइट नाउ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन पोर्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में। बी सेफ, ऑलवेज वेयर हेलमेट एंड मास्क ऑल्सो। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।